Hello friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. So in today's class, we will be covering our part 8 of the Constitution. So without any further ado, let's start today's session. Part 8 includes our Union Territories. This will be a short class. जब अगर छोटा चैप्टर है क्यों टाइम वेस्ट करना है फालतू में. सो क्या है ये हमारा प्यारा भारत थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेटली बन गया पर कोई नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. The second point, why there is a need for a creation of this special entity known as UT. Why we have the provisions for the states. State Reorganization Act has been passed in 1956 along with the 7th Constitutional Amendment Act. So why there is a need for these union territories? So there are 2 to 3 reasons. आप लिख सकते हैं अपने अगर कोई भी मेंस के एग्जाम में आ जाए. First of all, there is a पॉलिटिकल रीजंस. कौन है यहाँ? यूटीज, दिल्ली एंड चंडीगढ़. देन वी हैव सम कल्चरल रीजंस. यहाँ कौन सी है? पुडुचेरी है. देन वी हैव द सम स्ट्रेटेजिक रीजंस. यहाँ कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार. देन इन द पास्ट some of the northeast states like Manipur, then Tripura, these have been created as a UTs. So these are for special purposes. So these are some of the reasons that you can write in the mains exam that why there is a creation of UTs. Sorry for the disturbance. So these are the reasons why we have created UTs. Now let us see some of the administrative provisions. First of all, President has the authority to administer these UTs. Although indirectly, he will choose an administrator of UTs, and this administrator is different from the governor. Mind you, in the previous classes we have covered our governor chapter. In the governor chapter we have seen 2 functions of the governor. The first is he is the head of the state. It means constitutional head of the state. And second is he is the agent of center. So these are the 2 prominent provisions regarding governor. Here you can see one of the aspect is missing. That is, administrator is not the constitutional head of state. मैंने हेड ऑफ स्टेट ही लिख दिया. आयरनी देखिए. सो ही इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बट ओनली एन एजेंट ऑफ सेंटर. और किसका? प्रेसिडेंट का. सो दिस इज द काम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. पार्लियामेंट हैज पावर रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन इन रेस्पेक्ट टू द यूनियन टेरिटरीज. वैसे हैं कितनी आपको पता है ना? दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली हैव बीन रिसेंटली मर्ज्ड. तो वो हो गई. देन चंडीगढ़ है, देन दिल्ली है, देन पुडुचेरी है, देन अंडमान एंड निकोबार है. सो दीज आर द यूनियन टेरिटरीज. दिल्ली is the only union territory which is having the high court. And in the previous classes I have told you, if there is a jurisdiction और क्रिमिनल और सिविल जुरिडिक्शन इन द यूटी तो किसके पास अप्रोच करेंगे? सो मैंने आपको शायद से बता रखा है कि अगर ये लक्षद्वीप है तो ये केरला हाई कोर्ट के पास चले जाएगा. पुडुचेरी है ये मद्रास या तमिलनाडु हाई कोर्ट के पास चले जाएगा. अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के पास जाएगा. दिल्ली की तो अपने पास है ही. चंडीगढ़ कहाँ जाएगा? हाँ जी, हरियाणा और पंजाब की एक
कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है। दादरा एंड नगर हवेली कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्सली महाराष्ट्र, मुंबई। सो पार्लियामेंट हैज़ ऑल द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। किसकी लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इन रिगार्ड्स टू यूटीज़। यूटीज़ में जो भी लॉ बना सकती है वो है पार्लियामेंट। अब आप बोलोगे वी हैव द स्पेशल यूटीज़ ऑफ Delhi and Puducherry. So yes, we have allowed these two union territories to have their legislative assembly plus their CM and COM. In some of the union territories like Delhi, Puducherry, Andaman and Nicobar, this administrator will be known as Lieutenant Governor. So in both these two, yes, they have the legislative assembly which will legislate on the state subject, but these are the concurrent powers of these legislative assemblies. It means parliament can still legislate on the state subject with respect to union territories, including union territory of Delhi and Puducherry. Delhi is very a special case. तो उसमें जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उस पर ये नहीं बना सकता। स्टेट सब्जेक्ट्स में जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये कानून नहीं बना सकता। आई थिंक एक लैंड है, देन पुलिस है, ऐसे करके 3 है, तो एक बार वो आप याद कर लेना। So this was regarding the union territories. Let us see the special case of Delhi. While 69th Amendment Act to the Constitution, the official name of Delhi has been changed to National Capital Region of Delhi. National Capital Territory, NCT of Delhi. Here, a provision of legislative assembly has been provided with a strength of 70 members. One of the important provisions, the strength of COM has been decided to only 10% of legislative assembly. So this is quite different from the percentage that we have seen in the center as well as state legislatures. There we have the 15% of the legislative assembly. Here we have 10% of the legislative assembly. One more thing, who will appoint? I have told you we have the chief minister of these two UTs, but who will appoint this COM and this chief minister? Yes, president will appoint the council of ministers of these two. But who will provide oath to these COM? Yes, the lieutenant governor will provide. In the states we have seen, क्या देखा था हमने? गवर्नर ही उनको अपॉइंट करेगा COM को और उन्हीं से ओथ दिलवाएगा, हमने ये देखा था। Here the president is doing the same thing for the COM, including the CM of Delhi and Puducherry. The COM will be accountable to the lower house, that is legislative assembly, पर वो इंडिविजुअली प्रेसिडेंट की प्रेशर पे रहेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन यूटी ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। In the special case of Delhi, if there is a difference of opinion between the Council of Minister on one side and Lieutenant Governor on another other side, so this conflict will be referred to the President, and on the President's discretion, of course, with aid and advice of Council of Minister, this conflict will be resolved. Understood? So तभी हम बार बार देखते रहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार में उसको आना ही पड़ता है कोई ना कोई केस लेके। येट अनदर थिंग, द प्रोविजन विच वी हैव स्टडीड फॉर गवर्नर, that there will be a council of minister
with chief minister as its head to aid and advise the governor in daily functioning, except in so far the governor has to use his discretion. The same thing apply for lieutenant governor of Delhi. COM head CM, aid and advice of lieutenant governor, except in so far he is using his discretion. Understood? So this was all about the union territories. तब तक के लिए अगली भी छोटी क्लास होगी और आई थिंक लास्ट क्लास ही होगी. वी विल कवर Schedule 5 and Schedule 6. If your concepts are getting cleared, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.